Okay, Kamal, Questions? all answered. We'll go ahead with the second one, which is also very interesting to us. We've recently, acquired the IRPL technology, and आपके पास कौन सा वाला है? EI वाला है, कौन सा वाला है? we have the Mindscape one. So, Okay, I have EI. Yeah, I have the same one. Yes. and also we have the SBM. So we are using both. Okay. This is a wonderful combination. So I think this is going to be apt for you. This is again a bit long, but I'll try and cut it short fast. There are no financial this thing. No, globally 2024 tak dry eye is going to be an epidemic. It already is. Market research is saying it's going very fast all over the world. India and surrounding area 47% incidence, or I'm going very fast. Now, just basically patient को आपको भी मुझे समझाने का जरूरत नहीं है, but I just need to make you understand बेसिक कंसेप्ट. एक बार आप समझ आ जाते हैं तो आपको पेशेंट को समझाने में बड़ा सिंपल होता है. नाउ वन क्लासिकल एग्जांपल आई गिव माय पेशेंट इज दैट पानी अगर पड़ा होता है तो वो सूखता है हवा के साथ. अगर आप पानी के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, केरोसिन ऑयल डाल देते हैं या कोई टर्पेंटाइन ऑयल डाल देते हैं, ऑयल सूखता नहीं है. एंड वंस द ऑयल कवर्स द वाटर सरफेस इट स्टॉप्स एंड स्लोज डाउन द वाटर इवेपोरेशन. दे ऑल गेट दिस एग्जांपल एंड देन आई स्टार्ट माय काउंसलिंग आफ्टर दैट. फंक्शनैलिटी सबसे पहले बता देते हैं कि टीयर लिपिड्स आपके लिए मैं टच कर रहा हूं. टीयर लिपिड्स ड्राइनेस के लिए रोकते हैं, म्यूसिन जो होती है एंकर करती है, और वाटर जो उसको मॉइस्ट रखता है. बट बनता कहां है ये समझना बहुत जरूरी है. जो टीयर कंपोनेंट है वो तो ऑफ कोर्स हम सब लोग जानते हैं कि अपना लैक्राइमल ग्लैंड में बनता है. ऑयली कंपोनेंट हम जानते हैं म्यूबोमिन ग्लैंड में बनता है. वाटर भी लैक्राइमल ग्लैंड. म्यूसिन जो आता है वो आपके गॉबलेट सेल से आता है. इन सबको डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है. दे इंटरलिंक्ड हैं. You could have a mucin deficiency due to inflammation of the conjunctiva, and vice versa. But majorly 85% of your dry eye practice is MGD. So symptoms we all know. I'm going to go fast, Gaurav. If you want something, I can spend more time on that. I'll go to the real meat of the talk. So I'm just talking about basics which everybody knows. You're going at the right pace. Just it's fine. So now these things we need to understand. This is for all to understand. You cannot advise dry eye therapy for left, right, center for everybody. You will have a bad reputation in the market. We started slow. Now we are doing around 250 to 220 therapies a month on one machine only. Just one machine. I'm picking up 2 more machines now. So I am estimating with these 2 more machines coming in, we'll be doing 500 to 600 therapies a month. So very reason we are doing it and patients are coming back means it works. So how does it work? You know where not to use it and where to use it. And when you use it, Kamal, how many of these, whatever you are doing, like 200-300, are repeat treatments? Like patients who are... No, I'll tell you. 80 to 90% of my patients require 2 sittings. Get it? 80% patients 2 में ठीक हो रहे हैं मेरे. कंपनी बोलती है 3 करो, बट रियलिटी बता रहा हूं 80% पेशेंट आपका 2 सेशन में ठीक हो जाता है. 20% पेशेंट है जिसको तीसरा सेशन चाहिए, पर इस 20% में से जो तीसरे सेशन वाले हैं 40% रेकरेंस है. मतलब ये पेशेंट बहुत हैप्पी नहीं होगा. तो अगर आप ये टोटल स्पेक्ट्रम देखोगे तो मेरे पास नियरली 85% पेशेंट हैप्पी है, 15% बॉर्डर लाइन है. उस 15 में से 5-6 पेशेंट है जो डिसग्रंटल्ड है, डॉक्टर साहब कोई फर्क नहीं पड़ा है. बट मेजरली इट वर्क्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ्थैल्मिक फैक्टर्स हैं. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अगर आप ट्रीट नहीं कर रहे हो और थेरेपी दिए जा रहे हो कोई फायदा नहीं होगा. लेट्स से पेशेंट किसी ग्लूकोमा थेरेपी पे है, एंटी ग्लूकोमा ड्रग पे है, या BAK वाली ड्रॉप्स पे है. आप जितनी मर्जी थेरेपी दे लो नहीं ठीक. पेशेंट को विटामिन D डेफिशिएंसी है, आप थेरेपी 10 बार दे दो वो नहीं ठीक. पेशेंट को सोरियासिस है, उसकी स्किन की ट्रीटमेंट नहीं हो रही, वो इज नॉट टेकिंग द मेडिकेशन फॉर हिज स्किन. पेशेंट हैज गॉट सीवियर एक्ने रोजेशिया, वो ट्रीट नहीं कर रहे पर आप ड्राई आई को ठीक करते जा रहे हो, वो नहीं होगा. पेशेंट को हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, POCD के इतने सारे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास. मैं बोलता हूं भाई मैं आपकी ड्राई आई तो ट्रीट करूंगा ड्रॉप से, तब तक पहले आप अपना POCD ठीक कराओ. तो ये क्लैरिटी होनी. पेशेंट्स आर ऑन chronic antihistamines. Gaurav, you'll be amazed. There are patients who are taking cetirizine left, right and center just by themselves. They will never get treated for ड्राई है. उनकी ड्राई है बची रहेगी, चलती रहेगी. तो वो आपको ना कॉज को भी अटैक करना है साथ साथ, जो उसका एग्रीवेटिंग फैक्टर है. अगर आप सिर्फ थेरेपी देते रहोगे, दवाई देते रहोगे, तो मेरा 33% प्रैक्टिस मैं जो अपने
Just a moment. There seems to be an urgent call. Hold on. Deepshika, I am on a online class. Anything? Okay. So I was saying that a lot of patients will continue to do whatever they're doing earlier, they will not do. So good history taking is a very important part of your surface disorder or a dry clinic. So कौन सी medication खा रहा है patient, किसी चीज की therapy ले रहा है, कोई chronic medication पे है, कोई drops खुद से डाल रहा है. A lot of patients won't even know they have glaucoma. Some doctor has told them to put timolol and they'll have a chronic dry eye. You can keep treating whatever you want. You need to switch drugs to some other drugs which have less DAK, so and all that stuff. So it's very, very important to take care of the risk factors which are aggravating these patients. बहुत सारे इसमें again नहीं मैं जाऊंगा. मेरे current favorites में I give a combination of, especially when the epithelium is involved, I give a combination of a very low dose steroid. I give sodium trehalose, and I always give this mineral oil ointments at night. They are very helpful. Inflammatory dry eyes में doxycycline, in my experience, is a magic drug. I have treated worst of my dry eye patients with doxycycline. Now we're just sharing 33% of patient, Gaurav, you'll be amazed, operated elsewhere. 6 vision, my neighborhood clinics, but having dry eye, aggravated post-cataract surgery, are going to the same old practitioner, is just giving them methyl cellulose, sodium alginate, XYZ. Patient finally comes to us. He's sent to my room or my dry eye specialist. I have 3 consultants who do dry eye with me. We treat them. We tell them it's going to take 2-3 weeks. Guess what? We take care of the dry eye. The second cataract is done by us. The poor guy has operated the first time beautifully. There is nothing wrong with that eye. But just not giving the right treatment or not having access to the dry eye therapy machine makes all the difference. So हम जब study कर रहे हैं कि जो बाकी लोग के practice से मेरे पास, गौरव, मैं data crunching बहुत करता हूँ. मेरे पास जो न्यू पेशेंट किसी और के यहाँ से आ रहे हैं तो उसमें बहुत सारे अनहैप्पी पेशेंट भी है. ठीक है, कैटेट खराब था, सबलक्सेशन था, लेंस टिल्ट था, फाइब्रोसिस हो गया, आरएस प्रोलैप्स हो गया, जो भी. बट 33% पेशेंट ऐसा है जो सर्जरी परफेक्ट है. 6 पेशेंट है, मल्टीफोकल डाला हुआ है, मस्त है एकदम पेशेंट, पर पेशेंट हैप्पी नहीं. क्यों? क्योंकि उसकी वो डॉक्टर ने ड्राई आई नहीं पकड़ी और वो पेशेंट अनहैप्पी और पेशेंट को डॉक्टर को ब्लेम कर रहा है. सो प्लीज गाइस, डोंट टेक ड्राई आई लाइटली. It can actually make or break your practice. So this thing we all need to understand very, very importantly. होता क्या है? Basically क्या होता है? Hyperkeratinization हो जाती है या मीबम थिक हो जाता है. मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं आप लोग को दिखाने के लिए. How to catch a patient who will be doing very well with the dry eye therapy and what kind of medications to require. So I use all these training tools for all my new journey doctors. We use a lot of these tools to in my dry eye clinic also we have a slit lamp attached with a real time live camera on the television. So we show the relatives that this is what a dry eye looks like. And suppose एक और patient को बिठा के उसके relative को बिठा के देखिए आपका ये आंख normal है, ये माँ को ये problem है, इनका ये therapy होगा, इसका ये medication होगा, and they get it. So we use a lot of tools to do that. So evaporative dry eye, of course, we know क्यों होती है, because lipid layer weak होता है और सब उड़ जाता है. Problem होता है जब आपका ये drop out हो जाता है, जब ये बहुत देर तक मीबम थिक हो जाता है और टूथपेस्ट जैसा बन जाता है और प्रॉब्लम होती है. So ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीजों को पकड़ना. ये पेशेंट्स हैं who do very well. Meibomian glands को देखिए, Marx's line देखिए, Marx's line टेढ़ी है. There is an inflammation. You see vascularization of the tarsal plate. You will see stuck up, thick, tasty meibum coming out. You will see froth at the medial canthus. You will see floating lipid layer, broken lipid layer with each blink. So these are signs, very simple signs, where you know this is an inflammatory condition or it is an MGD in early stage, has not reached the inflammatory condition. You need to take care of that. So I'll be showing a lot of slides. I'll just keep these slides. Now, these are very important. Lid signs, very, very important. Margins, hypervascular, mucocutaneous junction, orifices आपके meibomian gland के plugged हैं, या ducts exposed हैं या टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, या Marx's line जो होती है वो टेढ़ी हो गई है, या जब आप प्रेशर देते हैं लोअर लिड पे, गंदा मीबम, पार्टिकुलेट, सस्पेंडेड कोलॉइड वाला मीबम आता है, और वर्स्ट इज टूथपेस्ट लाइक मीबम आता है. ये सारे पेशेंट्स
आपको थेरेपी को रिस्पॉन्ड करेंगे। मीबोग्राफी जब आप करते हैं, अगर आपका ग्लैंड ड्रॉप आउट है, टोटल ग्लैंड ड्रॉप आउट है या मोर देन 70% ग्लैंड ड्रॉप आउट है, ये पेशेंट बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे। सो आप मीबोग्राफी जरूर करिए, अदरवाइज दिस पेशेंट विल बी अनहैप्पी। अगर आपकी मीबोग्राफी में लैक्रामिन ग्लैंड की वाट लगी हुई है, आप जितनी मर्जी थेरेपी देंगे कोई फायदा नहीं होगा इस पेशेंट को। अगेन I'll be skipping this, I'll be skipping this. No, 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 no. Skip this. Now this is interesting. Now these are again slit lamp photographs taken by me to show the patient. You will see a froth at the canthus. Can you see this? I hope it's visible. दिख रहा है गौरव? Yes, yes. दूसरा, आपको इनर टार्सल प्लेट पे एक मीबम और फ्रॉथी सोपी लाइन दिख रही है। ये पेशेंट सुपर हैप्पी होने वाला है आपकी थेरेपी के साथ। क्यों? इसको एमजीडी के कारण बैक्टीरिया जो लिपिड लेयर है उसको ब्रेक डाउन करके सोप बना रहा है। इन पेशेंट की क्लासिकल कंप्लेंट होती है, इनकी बर्निंग बहुत ज्यादा होती है। यू नो दिस फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय द बैक्टीरिया इनटू सोप। जस्ट इमेजिन 24 आवर्स आपकी आंख के अंदर कोई सोप का सोल्यूशन पड़ा हो। जिन पेशेंट्स की फ्रॉथिंग हो रही है, जिन पेशेंट की लिपिड लेयर टूटी हुई है, और जिन पेशेंट्स को जब आप इवर्ट करते हैं टार्सल प्लेट काफी इन्फ्लेम्ड है, ये पेशेंट्स विल डू ग्रेट विद low dose steroid, doxycycline and therapy. Amazing results. Now these are some videos I want you guys to see. Now we will see this. आप देखेंगे इसमें froth भी दिखेगा. Now can you see this layer of froth here? And I'll also show you on the canthus. There, we will go to the canthus and we will see this. There, can you see this? This froth. Can you see this? Yes, Gaurav? yes, we can. Yeah. Okay, you'll also see broken mucus particles floating on the cornea. Mucus and lipid broken down. So इस patient को mucus disorder भी है। तो mucus disorder के लिए drugs like rebapamide and low dose surface steroid in combination with therapy works like magic. But whenever you see particles of mucus, do not forget to treat the goblet cells. And in my experience, Rebasar and all these, Joby, I will not name any medication, works excellent. Now, this is another case. Again, see, you will see lipid, broken mucus. Can you see that? These are broken lipid. Now, I'm showing you the signs where you should recommend a therapy. And you can use a slit lamp camera to actually show it to the patient that what it is. Can you see this now? Yes. ये देखिए लिपिड एकदम से गंदा सा, ये कितना ब्रोकन डाउन हो रहा है। सो लिपिड एंड म्यूकस टोटली सेपरेट है। तो ये पेशेंट में एक्यूट मीबोमाइटिस है। अगर आप इसकी टार्सल प्लेट की मैं आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा, ये वैस्कुलराइज्ड है, अंदर इन्फ्लेमेशन है। So these patients will do very well with therapy. The trick is I put them on a low dose steroid 4 to 5 days before I take them up for therapy. Another trick, Gaurav, I'm sharing with you is that once I do therapy, immediately I squeeze out the meibomian gland and I open it. Therapy के बाद ना म्यूकस मीबम डक्ट सॉफ्ट हो जाता है। 5-10 मिनट बिठाता हूं पेशेंट को, और जब मैं स्क्वीज करता हूं तो उससे क्या होता है, अनप्लगिंग होती है। तो पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ दिखता है 2 दिन के अंदर। जो प्लग्ड हुए होते हैं मीबोमियन ग्लैंड के orifices, मैं I'll show you videos how we do that. So there you see blinking movement पे you can see there's so much of bad dirty meibum spreading. तो इसमें तो इतना दिखाना ही काफी पेशेंट के रिलेटिव को होता है कि देखिए सारा ऑयल टूटा हुआ है, ऑयल लेयर खराब है, आपका ऑयल ग्लैंड डिफेक्टिव है। Now this is again. Now these are plugged orifices. Okay, can you see these, Gaurav? Yeah, we can. Yeah. Now these are plugged orifices. Now plugged orifices also do very well. तो ऐसे पेशेंट्स को again I use azithromycin drops, low dose steroid, doxycycline, 7 days के बाद therapy. Magic. Now you'll see again. Now see, can you see that paste coming out? Yeah. So we demonstrate this to the patient, his relatives. We record this. These are recordings I've done for the patients. A lot of times patients, especially lady patients, you know, doctor says, oh no doctor, this is so gross, don't show me. We are getting the therapy done. When should we get it done? So I tell them that the whole gland, we give them an example, it's like coconut oil which is frozen.
and it's blocking the ducts, and sooner or later it will kill your glands, and you may get therapy done at the end of 1 year without any benefit. So this is the best time to get therapy done. So I hope your doctors are getting to see how a plugged orifice can be unplugged. Yes. Toothpaste. Now this is another. So ये सारे मेरे real time videos हैं गौरव, जो patient को दिखाते हैं हम. अब ये patient की therapy हो गया है गौरव. Okay. Now what we're doing here is I have these specially designed forceps. Immediately after therapy, after half an hour, we open all the blocked plugs. So the patient feels an immediate response. Within 2 days, patient starts feeling well. Therapy का effect आ जाता है, sebum fresh बनना शुरू हो जाता है, unplugged orifices खुल जाते हैं. So the cumulative effect is excellent for these patients. They are very happy. Again, now keep skipping. Okay, when do I use trehalose related compounds? जब मेरी staining cornea की positive होती है, तो मैं थोड़ा सा steroid and sodium trehalose लेता हूं. और sodium aluminate बहुत तरह की बकवास आती है, so I would recommend going for only known branded companies. Rest of other sodium trehalose are just hogwash. They're trash. I'm just skipping now. All Marxist line के बारे में मैंने बात कर लिया. ये देखिए, ये टोटली ड्रॉप आउट हो चुका है. इस पेशेंट का जितनी मर्जी थेरेपी दे दो, इसको कुछ नहीं होने का. ये अंदर है ही नहीं कुछ माल. इसमें देखेंगे आपको वैस्कुलराइजेशन. आई डोंट नो, कैन यू सी दैट और नॉट गौरव? Yes, we can. This is post therapy 1 week. Vascularization started going down. The photograph is not doing justice on the screen, I don't know, but the vascularization has also gone down. Right. Inflammation has gone down. Patient is happier. Patient is very happy. And the patient, this is a 52-year-old lady. I treated her. She was going to other doctors. They were just giving her methyl cellulose and all that shit. Treated her. She got her mother from Greater Noida, got her cataract surgery done. She asked her elder sister's daughter to come for LASIK. This is benefit of treating a patient of dry eye. She gave me 2 surgical patients. Again, iske bare mein you want me to talk much about it? I think just quick reference, because some of us. Because my agenda was to explain how to convince patients, how to talk to patients. Of course, आप patient को dropout दिखा सकते हो, percentage dropout समझा सकते हो. बहुत सारी therapies available हैं. Again, I use a lot of tea tree oil also, Oculis, Gaurav. Just want to share with you. A lot of times when I have inflammatory dry eye which is not responding to my therapy also, मैं उन पेशेंट्स को टी ट्री ऑयल के साथ लाता हूं. और आजकल एक हाइपोक्लिन करके एक सोल्यूशन आया है, मैंने 3 वीक से यूज करना शुरू किया है. आई वुड नॉट से अभी मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बट दैट्स आल्सो वन थिंग दे आर सेइंग दैट दिस वर्क्स. ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. You're treating a patient for dry eye, but you're also giving him some local eye drops. Local, I mean cheap eye drops, and they have BAK. The patient will never improve. You can keep giving these patients therapies. So you make sure कि जो ड्रॉप्स आप दे रहे हो उनकी क्वालिटी क्या है, उनका पीएच क्या है, उनका सोल्यूट सॉल्वेंट कैसा है, क्वालिटी कैसी है उसकी, उसमें बीएके है कि नहीं, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी. तो जब आप ड्राई आई पेशेंट को लुब्रिकेंट देते हो और एक नॉर्मल पेशेंट को लुब्रिकेंट देते हो जो कहता है डॉक्टर साहब कोई दवाई लिख दो, दोनों में आपका थॉट प्रोसेस अलग होना चाहिए. नॉर्मल पेशेंट को कुछ भी एक्सवाइजेड दे दोगे, इशू नहीं होगा, पर ड्राई आई पेशेंट को अगर आप कॉन्शियसली अच्छा प्रोडक्ट नहीं दोगे, इश्यूज होंगे, उसके इश्यूज सॉल्व नहीं करेंगे, एंड he'll actually in the end blame you. Now, dry eye syndrome, as I said, 80% plus is due to MGD. And if you're not taking care of the MGD, the dry eye medication you can keep giving these patients will not improve. So vitamin D and vitamin C is known to work. Light pulse therapy, rebapamide, I've already talked about. Artificial tears, hormone replacement therapy. I have not used this, so I will not comment on this. LipiFlow, I have not used. I'm going fast. Now coming to the technology again. Again, आप सबको ये मालूम है ये. This is interesting. So I'm sure Gaurav, you know this, how to read the reports. Yes. And when to go in and when not to go in. Yeah. You can talk a little bit because we have our retina colleagues who probably won't have heard this. Okay. So classical example is, let's see, the non-invasive breakup time of the tear is low here and is borderline low here. But the lipid layer is very good, which means meibomian gland तो बढ़िया चल रहा है.
मेबोमिन लिपिड लेयर अच्छी है, मेबोमिन ग्लैंड भी इतना बुरा नहीं है, टीयर फिल्म मिनिस्कस लो है, तो 1 और 4 लो है, लिपिड लेयर ठीक है, इसको कोई थेरेपी देने की जरूरत नहीं, इसको मेबोमिन ग्लैंड डिस्फंक्शन नहीं है, ये सिक्रीटरी ड्राई आई है, ये और कोई कारण है, ये आपका प्रॉब्ली प्रेजर्वेटिव इंड्यूस्ड ड्राई आई है, ये आपका पेशेंट एंटी हिस्टामिनिक्स खा रहा है, ये पेशेंट को विटामिन डी डेफिशिएंसी है, तो इसको थेरेपी देने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, बिकॉज इसकी लिपिड लेयर भी ठीक है, ग्लैंड लॉस नहीं है इसको, तो इसको आप मत दीजिए, इसको आप सिर्फ टीयर रिप्लेसमेंट थेरेपी दीजिए। अब आपके पास एक पेशेंट आया है जिसमें लिपिड लेयर डाउन है, एनबट डाउन है, मेमोमियन ग्लैंड हेल्दी है, टीयर मेनिस्कस हाइट लो है, बट ऑफ कोर्स क्योंकि लिपिड लेयर कम है, लिपिड लेयर कम है तो टीयर मेनिस्कस ड्राई होगा तो एनबट खराब होगा, बट मेमोमियन ग्लैंड ठीक है, ये पेशेंट विल डू वेरी वेल विथ थेरेपी बिकॉज द ग्लैंड्स आर इंटैक्ट, you're stimulating the gland to secrete more lipid. So these are going to be happy patients. So it's always a good idea to do a diagnostics before you proceed again. Now this patient, everything is fine, but NBERT is bad. So here the blink reflex is faulty. So the machine also measure that are you closing your eye completely when you're blinking or not. So this is also very, very important. And of course, meibography करके आप patient को दिखा सकते हैं कि ये normal gland है एक आंख का और ये आंख का दूसरी आंख का normal gland है. Now this is very important. I think this is the punchline of the whole presentation, Gaurav. If you have a patient of dry eye, make sure you treat them before you take them for cataract. Otherwise, they will become like sore thumbs. They're going to be, actually, I don't want to use the word your happiness. So make sure everybody, if you feel patient got dry eye hai, you see some inflammatory reaction, you see a surface disorder, send it to your colleagues who's taking care of your surface disorder in a clinic. Make sure 1 to 2 weeks की therapy दे दो, treatment दे दो, session दे दो, फिर cataract surgery कर दो. अगर आप उसके बिना cataract surgery करेंगे, because cataract surgery itself is an insult to the surface. There's so much of fluid flowing. There's you putting povidone iodine, the eye is exposed. There's an inflammatory, cytokinins being released in the tear film. They all aggravate your dry eye. So that's the reason patients who have borderline dry eye, post cataract surgery, they suddenly start saying chuban hai, radak hai, because you have precipitated their dry eye. So this is one format which I've made sure across all my centers. Borderline dry eye cases, diagnostics come in a protocol hai. If it is there, the patient is taken up first for dry eye management, then taken up for surgery. Medicine से improve हो जाएंगे, medicine से आप improve हो जाएंगे, but we may need to give you therapy, but let's wait for another 1 week or 2 weeks. Now the patient is big mentally primed कि मेरे को अगले 2 हफ्ते में एक थेरेपी होगी, मेरे को एक सेशन के 10,000-12,000 रुपए देने पड़ेंगे और उसको थेरेपी का मेडिसिन का थोड़ा इंप्रूवमेंट भी शुरू होता है, इज मोर एमिनेबल टू थेरेपी. बैठते साथ योर क्वेश्चन इज राइट, बोलो आपका थेरेपी चाहिए, पेशेंट बोलेगा अरे मेरे तो खुजली जलन है, उसके लिए 12,000-15,000 रुपए क्यों ले रहे हो, मेरे को आप ड्रॉप्स दे दो, तो आप उसको बोलो आप ड्रॉप्स लो, हम ड्रॉप्स दे रहे हैं, एंड वंस we see how we work, we may need to give you a thing called IPL, and if it is required, we will give it to you. The patient is mentally primed. Right. I never suggest it in the first setting, never. I just tell them you may require it, I'll decide on your next visit. So the patient knows that he's been informed. Thank you, sir. Sir, I have a doubt. If you find a case of meibomitis sicca with almost closed orifices, so do you prefer to do IRPL in that patient? No, it will not work. You know it. It's a loaded question. It will not work. Sir, any experience with using IRPL for recurrent chalazion? I have done nearly 100 cases plus, and it works. I think it's a very good thing you asked me this. In fact, I started doing this and I didn't believe in this, but I thought, logic की block orifice है, meibum कट्टा हो रहा है, और मैंने 100 patients plus किए हैं, और मेरे पास, in fact, my chartered accountants, my personal chartered accountant's son used to have recurrent chalazions. So he's around 20 years old and he also has acne and all that stuff. तो उसको मैंने acne का treatment भी करवाया, skin specialist के पास भेज के, और उसको मैंने IRPL दिया,
और वो पेशेंट लास्ट 2.5-3 साल से एक बार भी उसको क्लेजर नहीं आया. सो दिस इज वन ऑफ एनेक्डोटल नोन टू पेशेंट एंड माय सीए वुड गिव मी कॉल कि डॉक्टर कमल फिर से हो गया, क्या करे, कुछ करिए ना इसका. सो दिस पेशेंट आई क्लियरली रिमेंबर was coming to me for last 4-5 years. So it works. Answer is it works. And so these patients have also done well with just 2 sessions of the treatment, or you've given them like? No, again, आपको ये देखना है कि ज्यादातर कैलेजन के जो पेशेंट्स होते हैं ना, जो रेकरेंट, इसमें आपको डेमोडेक्स भी रूल आउट करना है, सेबोरिक ब्लेफाइटिस भी देखना है. वो सब चीजें मैं हर बार बोल रहा हूँ, कॉजेटिव एजेंट को ढूंढते रहिए साथ में. मगर अगर आपको लग रहा है कि ये सिंपल ब्लॉक्ड ऑरिफिसेस हैं, आपको थेरेपी 2 सेशन इज गुड इनफ. एंड इन पेशेंट्स को आप यू कैन पुट देम ऑन सम लॉन्ग टर्म doxycycline. These are young patients, they do well. Most of these patients you will realize have oily skins. I'm sure you will agree with me. Yes, yes, sir. So it'll help them in other skin issues also. And one last question. I noticed you using, I don't know, it's slightly differently designed forceps for expressing the glands. Yeah. We use Yeah. forceps. So is this something customized and designed by you? Yeah. I've got 2 forceps designed. One forceps I designed which had rollers. So I would put it into the tarsal plate, press it and pull it up. But I realized that was more painful because वो compression के साथ pulling भी कर रहा था. So then I designed this forceps. It's got 2 plates and it's very easy to hold and it's not scary to the patient. वो जो मेरा roller वाला forceps था, वो patient could see it coming. So that was pretty scary. So this is not scary. It just comes from the side and I hold it like a scissor. It's like a scissor. Okay, sir. Thank you. Kamal, what is the difference between how patients respond with younger patients and like middle age and elderly? Is there a difference in the way they respond to the treatment? Yeah, elderly का response अच्छा नहीं आता because gland dropout गौरव इनका काफी होता है, but improve हो जाते हैं, medications कम हो जाती हैं. Again, you laugh, उनकी चू कम हो जाती है. Yeah. So we have an oculoplasty surgeon also, and maybe he has any question. No? Any already answered? And our retina colleagues have any questions? GS, you have any question? Retina patient, your retina people will have a lot of dry eyes. Is it? Yeah. They'll have a lot of dry eye because a lot of times, especially when you do this buckling, you messed up the whole goblet cells. Sir, I have a question about your previous talk regarding the patient delight factor. You just mentioned that you don't sell any IOL or machine. So the packages for cataract, are they decided according to the surgeon, or like a person choosing a IOL will have the same package irrespective of the surgeon? Absolutely. You cannot grow as an organization if I pitch myself better than the other guy. Because I have realized one thing, I just have 2 hands. And if I pull all the patients to myself and I open 35 more centers, which I'm opening in next 2 years, I just have 2 hands. So if I tell the public that I'm better than the guy sitting in the next chamber, anybody who can afford me will gravitate to me. So why am I having other colleagues? उनकी growth कहाँ है फिर? उनकी professional satisfaction कहाँ है? सबके rate सेम है. सबके rate सेम है. Patient का package decide होता है. उसने multifocal लिया, EDOF लिया, hydrophilic लिया, hydrophobic लिया या femto लिया. Period. Over. काले चोर से सर्जरी कराए उसका same package. सौरभ हंस रहा है, but I'm in a very friendly environment, so that's why I'm speaking this language. Right. So I tell the counselors, the patient can opt for anybody. And you'll be amazed, Gaurav. I will see a patient today, and suppose the patient says Thursday suits him, and I'm not operating on Thursday on that center. 68% of those patients will get operated by any surgeon on Thursday in that center. That is the power of Sharpsight team. Samir will see a patient, I'll operate him next day. Because rotation होते हैं हमारे सारे सेंटर्स में. तो मैं एक दिन देखता हूं, एक आंख मैं करता हूं, दूसरी आंख कोई और सर्जन कर रहा होता है. वो आपको पेशेंट में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि वो डॉक्टर कमल या डॉक्टर गौरव के पास नहीं आ रहा, वो दृष्टि में आ रहा है. तभी दृष्टि ब्रांड बनेगी. अदरवाइज गौरव ही ब्रांड बना रह जाएगा, सौरभ ही ब्रांड बना रह जाएगा. और भगवान ने इनको 2 हाथ दिए सिर्फ. आप 3000 सर्जरी महीने की नहीं कर पाओगे. सबको उतना एम्पावरमेंट चाहिए, सबको उतनी इंपॉर्टेंस. और इतनी बार होता है
a lot of times, suppose I'm not available on some day, patient says I'm traveling, so I will say, I will personally take that patient to my associate's room कि ये डॉक्टर सिद्धार्थ है, ये फ्राइडे को आपकी सर्जरी करेंगे. अरे नहीं डॉक्टर साहब आपसे कराना है, तो आई टेल हिम कल को मेरे को कैटरेक्ट होगा ना तो मैं सिद्धार्थ से कराऊंगा. ही इज एज गुड. That's it. That one sentence from a senior person is so empowering for the junior associate. You can't believe it. My associates come to my room and say कि सर आपने इतनी बड़ी बात बोली है, मैं आपको I will outdo myself. And the patient is his after that. I don't care. वो अपने relatives को भी उससे कराए, मुझे क्या है, शार्प साइड में आ रहा है ना पेशेंट यार. पेशेंट तो शार्प साइड में आ रहा है ना, टर्नओवर तो शार्प साइड की हो रही है, ग्रो तो शार्प साइड कर रही है. So we don't rotate doctors from one center to another center, which most of my other fellow corporates are doing. कि ये पेशेंट ये डॉक्टर की ब्रांड बन जाएगी, इसकी फैन फॉलोइंग हो जाएगी, तो ये पेशेंट तोड़ के ले जाएगा. अरे अगर उसमें जोर है अंदर तो वो जहां भी जाएगा तोड़ के ले जाएगा. उसको आप एम्पावर करो. वो पहली बात जाए क्यों छोड़ के मेरे को, मेरे में कमी अगर मुझे कोई छोड़ के जा रहा था. हमारा एट्रिशन रेट लोएस्ट इंडस्ट्री में, ऑफ्थाल्मिक इंडस्ट्री में 1.4%. We have the lowest attrition in the industry. Again, off the cuff, my doctors have ESOPs. Each doctor at the moment is worth 2-3 CR each in the company. I've given them shares. Why will they go? Why should they go? And I've not given them. They've deserved it. They've worked for it. They've made the organization where it is now. मेरा कुछ नहीं किया, उनका हक है. तो जब सब एक चीज को बिलीव कर रहे हैं कि ये टीम हमारी है और हम ये टीम है, and there is no third person, patient delight is bound to happen because everybody is pitching in for anybody. Everybody is covering the other person. एक बंदे से गलती होती है, दूसरा डॉक्टर टेक ओवर कर लेता है. So there is no hesitancy in sharing patients. I will get a call कि सर मेरे से परसों ये हो गया सर, I will गलत डल गया सर, वो टॉरिक गलत डल गया सर, please. If I'm not there, it will send to somebody. So nobody is going to say कि अरे उसने गलती कर दी मैं ठीक कर दूंगा. Nobody will show superior. So I will sometimes say कि ओ अच्छा आपका लगता है लेंस थोड़ा घूम गया है, आप डॉक्टर वर्षा के पास जाइए वापस. I think she just sent you to me to take a second opinion. I agree with her. So then she'll say सर मैंने तो आपके पास रोटेशन के लिए भेजा था. मैं बोला नहीं तू ही रोटेट कर, मैंने पेशेंट को बोल दिया कि तू ही करेगी. बिकॉज अगर मैं रोटेट करके ठीक कर दूंगा ये पेशेंट मेरा हो जाएगा. सर्जरी बेचारी उसने करी है. So I'll send the patient back saying that yeah, she called me to ask you that does the eye already need rotation? We both agree. You go back to her. We have a consensus. She'll rotate the lens tomorrow. Now the patient will get the rotation done. Be happy. Get the second eye done from her. But if I start correcting people's mistake and trying to show that I am the end-all solution provider in the organization, guess where the traffic is going to flow? The traffic will flow to me. I don't want that. I want to live a life. मैं 5 बजे घर आ जाता हूँ. मैं 10 बजे काम शुरू करता हूँ. 4:30 मेरी ओपीडी बंद. 5 बजे मैं घर. और मेरे डॉक्टर्स को भी इंस्ट्रक्शन है कि जिंदगी जियो, live a life. Work is not life. So everybody is encouraged to finish work 5:36, go back home. But be efficient. रात के 10 बजे तक बैठने से फायदा क्या? जो आप पैसे कमा रहे हो उसका करोगे क्या भाई? So one question, like for example, with chronic retinal conditions like wet AMD, after a point, some patients get frustrated, like say, for example, with the number of injections. How do we keep them coming back? Okay, now this is a very good question. We had the question discussed 4 months ago in our huddle meet. We tell these patients that unfortunately, this is what the technology is available today. There are more drugs coming which may give you a more tenure of 5 months, 6 months, but yet they are not available. So you have a choice that we continue this, because this will retain your vision till something new comes, or we drop it and lose it, and then we don't know what happens. Most of them, though they are rightly aggravated, rightly agitated, will still comply. Because even we know there's no other choice. I have one patient who's got 37 injections, and she is my classmate's, hostel mate's mother. He's a very big renal specialist in USA. वो frustrate नहीं होता because he's a doctor. He's talked to his fellow doctors, ophthalmologists. तो उसकी मॉम ने मुझसे एक बार सवाल पूछा था कि बेटे कब तक होगा? मेरे को तो लगता है मैं जब मर भी जाऊंगी तो आप इंजेक्शन लगा रहे होगे मेरी आंख के अंदर, She was so agitated.
So I told her, Auntie, the thing is, I would rather, have you seeing than have you blind. So if it means even if you're bedridden and you need to be given an injection, we will give you an injection because we want you to see the world. Again, Gaurav is laughing, but you need to be, you need to come out with stark truth to the patient. Let them realize the importance कि अगर आप bedridden भी हो तो इंजेक्शन तो अगर चाहिए तो चाहिए. ये नहीं होगा कि आप बोलो जी मेरे को नहीं लगवाना तो नहीं लगवाना. Then be ready to lose the patient. I think I made the session little lively also. I think we have a full house now, and everything went off so well, Kamal, and time flew. But as expected from you, we always enjoy your participation, and I'll be calling you to thank you in the morning. I think you should go pick up Rita and enjoy whatever. No, I've sent the driver. I just texted to the driver. Then he's waiting outside the party. That ma'am जब बोलेंगी घर ले आना मैं नहीं आ रहा. We wish you could have been here with us to join us for dinner after this, but for another time we'll invite you over and we'll have more practice management sessions here. Okay. Yeah. Thank you so much. But your second talk was as good as the first one. So Thank you. both talks are amazing, and we are really grateful for you to spare your time on such short notice. And Alcon team is also very happy that you're here because they are helping us do this session today. So thanks a lot for joining us. And we just have another small talk on one of Alcon products on dry eye. So after that, we are all going to break for dinner, and we'll send you a picture from all. Okay. So I'm gonna nibble on the sandwich my wife has whipped for me before she left because she knows me. She knows I won't. मेरे लंबी चलेगी talk तो मैं आऊँगा तो नहीं. तो उसने पहले sandwich बना दिया मेरे लिए. We really enjoyed it. Thank you so much. It was so चलो. time flew, and bye bye and good night. And Okay. Bye bye. Thank you.